Good morning to everyone. This is Rahul Kumar Dikshit, and today we are going to discuss about the constructor topics. In the last class or in the last lecture, we discussed about the encapsulation. In encapsulation, we are also used constructors in the as a member method. So in this lecture, we are going to discuss about the constructor. So what is constructor actually? A constructor is a special member method of the class. So this is in these notes. Please check it out. Is written here. So constructor is a special member method of the class. So why it is special and what is a member method? So constructor, let's say we have a class circle. So why it is special? A constructor name is same as class name. A constructor name is same as class name. जिस नाम का क्लास होगा हमारा उसी नाम का कंस्ट्रक्टर होगा. And it is a member method of the class. And there is no return type mentioned here. अगर हम कोई भी फंक्शन बनाते हैं, let's say sum, कोई भी फंक्शन बनाइए आप, it returns some value and it must have return type. अगर जो हमारा फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, फिर भी हम लोग void लिखते हैं. But in case of constructor, we are not having such kind of situation. Constructor does not have any return type. So, hence, it is a special member method of the class. So, the question is why the constructor is used. A constructor is used to initialize the object. What that means is, please check it out. If I'm making one class, public circle, and in that one radius is there. One data member, this is a member variable radius. And if I'm going to create the object of that particular class, what is the value of this radius? What happened when we are creating an object class? In the last class we discussed it. We created an object and it is consisting only one member variable, that is radius. What is the value of this radius? कितनी वैल्यू इसकी होगी इसके बारे में हम बात करें. So constructors are used to initialize the object when it's created. जब भी कंस्ट्रक्टर का ऑब्जेक्ट बनेगा उसमें क्या वैल्यू होगी, कौन सा मेथड पहले चलेगा, कैसे एग्जीक्यूट होगा, कैसे उसकी स्टेट्स डिफाइन होगी, ये सब हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू कर सकते. अभी हमने इस क्लास में कोई भी कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड नहीं किया. If we are not, so now we are first of all now we are going to discuss about how many types of constructors are there. और बड़ा कंफ्यूजन है यहाँ पर. तो पहला कंस्ट्रक्टर, that is default constructor. Default constructor. Number 2, no argument constructor. And number 3, parameterized constructor. So what is default constructor? In this class, we are not mentioning any kind of constructor in it. Then also the value of radius is initialized by 0. If I'm printing that particular circle C, system.out.println, and I'm printing here C.radius, it prints 0.
हमने तो कोई कंस्ट्रक्टर बनाया नहीं, फिर भी हमारे रेडियस की वैल्यू 0 हो रही है। ऐसे if we are not providing, write down the statement, very important statement. If we explicitly not provide any constructor to class, JVM will do that. JVM will do that, or you can say that JVM will provide a constructor, known as default constructor. हमने कुछ भी नहीं प्रोवाइड किया, फिर भी हमारी वैल्यू को कोई इनिशियलाइज कर रहा है बाय डिफॉल्ट। किसके द्वारा हो रहा है? जेवीएम के द्वारा हो रहा है। और जेवीएम भी नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर टाइप का ही सिग्नेचर बनाता है, लेकिन हम उसको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं हम लोग सबसे पहले कैसे नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर इंट्रोड्यूस हुआ। तो गो टू द इक्लिप्स, और लास्ट क्लास में हमने सर्कल क्लास बना रखी है और उसमें कंस्ट्रक्टर भी बना रखे हैं। हम उन कंस्ट्रक्टर्स को हटा देंगे और देखते हैं कि आउटपुट कैसा आता है। इज इट क्लियर? नाउ तो दिस इज अवर सर्कल क्लास। हमने इससे पहले से ही कंस्ट्रक्टर बना रखा है, तो हम उन कंस्ट्रक्टर्स को अभी के लिए रिमूव कर देते हैं। तो माय सर्कल क्लास इज हैविंग ओनली अ रेडियस वेरिएबल and get area, or the member methods are there. So I'm going to create the object and I'm just printing the radius value. C dot radius and check करते हैं कि आउटपुट कैसा आता है। So what the output is? Output is 0. What that means is someone is there who is initializing the variable radius. Who is that? That is the default constructor. So I would like to mention one more line over here. The default constructor initialize the member variable to its default value. What that means is हमारी क्लास में हमने एक रेडियस बना रखा है जो इंटीजर टाइप का है, इसलिए हमारे उस रेडियस की वैल्यू 0 आई। अगर जो स्ट्रिंग टाइप का कोई नेम बना रखा होता स्ट्रिंग, तो क्या होता? इसकी वैल्यू नल होती। स्ट्रिंग होता या कोई ऑब्जेक्ट होता तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर उसकी वैल्यू को नल से इनिशियलाइज करता। अगर जो फ्लोट टाइप का होता तो उसको 0.0 से इनिशियलाइज करता। अगर जो कोई कैरेक्टर टाइप का होता तो उसको कैरेक्टर नल से इनिशियलाइज करता। तो कहने का मतलब यह है, अगर जो हमने कोई भी कंस्ट्रक्टर अपने क्लास में नहीं प्रोवाइड किया है तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जेवीएम प्रोवाइड करता है और वो सारे डेटा मेंबर्स को उसकी डिफॉल्ट वैल्यू से इनिशियलाइज कर देता है। दैट इज द फर्स्ट कंस्ट्रक्टर, दैट इज द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। चेक करते हैं। So this is the no argument constructor. You can discuss this about that. So no argument constructor. हमारे पास एक क्लास थी सर्कल, और ये मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूं कि कंस्ट्रक्टर का नाम सेम एज क्लास नेम होता है। इसका कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है, बट अगर जो मैंने उस स्पेशल मेंबर मेथड में कोई भी वैल्यू पास नहीं करी है, मींस द आर्गुमेंट in this parenthesis there is no such argument, no such definition is there of the argument is passed here, तो ऐसे कंस्ट्रक्टर्स को नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर बोला जाता है। ऐसा क्यों? मान लेते हैं, क्यों बनाना है इसको, मान लेते हैं हम एक सर्कल क्लास बनाना चाहते हैं और हम अपने रेडियस की वैल्यू को 0 नहीं रखना चाहते। We give some value as a developer, I require कि जब भी कोई रेडियस बनाए और उसकी कोई भी वैल्यू को पास ना करे, उसकी वैल्यू 0 ना होकर 2 होनी चाहिए। तब क्या होगा? Then no argument comes into the picture, and if somebody is doing like that, तो उसकी वैल्यू 2 होनी चाहिए। Now, if I'm going to make the object circle C is equal to new
circle. First it checked in the class, क्या कोई ऐसा कंस्ट्रक्टर अवेलेबल है जो कोई भी आर्गुमेंट एक्सेप्ट नहीं करता है? यस, देयर इज अ कंस्ट्रक्टर जो कोई भी नो आर्गुमेंट एक्सेप्ट नहीं करता, उसको कॉल करो. यस, कॉल इट. तो और उसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि हमारे रेडियस की वैल्यू को 2 से इनिशियलाइज करो, ना कि 0 से. एक चीज मैं और मेंशन करना चाहता हूं. वन मोर थिंग आई हैव टू discuss this about. One more discussion is left. What is that? If we provide, there is an important note. If we provide any kind of constructor explicitly, then JVM will never provide the default constructor. What that means is, we explicitly provide the no argument constructor. Now JVM will not entertain us. तो चलिए बनाते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर अपने एग्जांपल में और चेक करते हैं कि क्या होता है. अभी हमारे सर्कल के पास कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं था, उसने चेक किया कि कोई कंस्ट्रक्टर है नहीं है, तो जेवीएम ने उसको कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड किया और हमारे रेडियस की वैल्यू को 0 से इनिशियलाइज किया. अब मैं क्या करता हूं, आई एम गोइंग टू प्रोवाइड अ नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर हियर, and in that I am writing like this: radius is equal to 2. That means now I am going to execute the code. Let's check it out. And now if I am going to print the value of the radius, it prints 2. Hence it is a no argument. Next, parameterized constructor. पहले हमने कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, फिर हमने नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर बनाया, लेकिन फिर भी रेडियस की वैल्यू फिक्स है. यूजर यूज करते समय कुछ वैल्यू देना चाहता है कि भैया जब सर्कल क्लास का ऑब्जेक्ट बने तो मैं उसके रेडियस को 10 रखना चाहता हूं. देन व्हाट शुड बी हैपन? तो न्यू सर्कल, देन आई वांट टू पास सम वैल्यू. यूजर जब भी सर्कल को यूज करना चाहता है वो कुछ वैल्यूज को पास करना चाहता है. अब क्या होगा? देन पैरामीटराइज कम्स इन द पिक्चर. तो कैसे बनाएंगे? क्लास सर्कल and there is a one int radius and creating एक कंस्ट्रक्टर हम पहले से क्रिएट कर चुके थे, that is no argument constructor. This is no argument constructor, and again because the constructor name is same as, but ये क्या कर रहा है? ये argument integer type का accept कर रहा है. तो हम क्या करेंगे? radius is equal to जो भी वैल्यू आई है उसको radius में कॉपी कर दें, and rest is same. That means what? At the time of creation of the object, the value may be passed by the user and that should be initialized to the radius member variable. क्या होता है? तो अब अभी हम यहाँ पर कोई वैल्यू पास करना चाहते हैं, तो देखिए क्या बोल रहा है. There is an error. What it is showing? A constructor circle int is undefined. मतलब अभी आपकी क्लास में ऐसा कोई भी कंस्ट्रक्टर अवेलेबल नहीं है जो इंटीजर टाइप की वैल्यू को एक्सेप्ट करता हो. ठीक है सर, बनाते हैं. बना दिया. तो क्या करें? Circle, because the name of the, and in that I am passing int r, and whatever the value is passed in r, that is initialized in radius. और अब हम देखते हैं कि वैल्यू क्या है. जैसे ही हमने यहाँ पर बनाया ये एरर यहाँ पर खत्म हो गई. Now my circle class is consisting a constructor which accepts integer type argument. If I'm going to execute this, see what's happened? The value to value is good. There are 3 types of constructor in the class. One is default constructor, 2 is no argument constructor, and 3rd is parameterized constructor, in which we can pass different kinds of parameters. So how many constructors are created in the class? N number of constructors is created. But
It invokes implicitly when the object is created. बहुत सारे बच्चों को ये डाउट रहता है कि कंस्ट्रक्टर सर ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए यूज होता है. नहीं, कंस्ट्रक्टर इज यूज्ड टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट. New keyword, through you new keyword, you can create the object. Constructor is invoked implicitly when the object is created to initialize the object. What are the next? So we discussed about constructor is a special member method. It has the same name as class name. It declares class but not having any return type. What is default constructor? What is no argument constructor? And what is parameterized constructor? It is used to initialize the object. हमने ये भी डिस्कस किया. It is invoked implicitly. जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा ये अपने आप कॉल. implicitly का मतलब अपने आप कॉल. कंस्ट्रक्टर को हम कुछ भी डिक्लेयर कर सकते हैं. इट कैन बी डिक्लेयर्ड एज प्राइवेट, इट कैन बी डिक्लेयर्ड एज प्रोटेक्टेड, इट कैन बी डिक्लेयर्ड एज पब्लिक. और डिफॉल्ट तो ये था ही. यू कैन डिक्लेयर द कंस्ट्रक्टर एज स्टैटिक एंड फाइनल. हम कंस्ट्रक्टर को ना ही स्टैटिक बना सकते हैं. क्यों नहीं बना सकते हैं? जब हम स्टैटिक और फाइनल के बारे में पढ़ेंगे तब इसको दोबारा से डिस्कस करेंगे. नॉट टू implement as static and final. Constructors never be inherited. जैसे ये हम इनहेरिटेंस में देखेंगे कैसे नहीं इनहेरिट होता है, फिर भी हम जानने का प्रयास करते हैं. Constructors are never be inherited, but it can access through the super keyword. And there is one more concept we can discuss when we discuss about the super keyword. What is constructor chaining? आप लोग भी इसके बारे में पता करिए. What is constructor chaining? मैं अपनी लाइन एक मैंने अभी लाइन लिखी थी, उस लाइन को मैं जस्टिफाई करना चाहता हूं. प्लीज चेक इट आउट. लास्ट लाइन, इंपॉर्टेंट नोट. If we provide any kind of constructor explicitly, that JVM will never provide the default. एक बार देखते हैं एग्जांपल. अभी हम लोगों ने क्या किया, सर्कल क्लास में दोनों कंस्ट्रक्टर. जब हमारे पास कुछ भी नहीं था, we are not making any kind of constructor, and then we are passing as a no argument. What happened? There is no error is showing here, and if we are going to print it out, it prints 0 because default constructor is provided by the JVM. But if we provide both the constructors, then also it is executed fine. Please check it out. It is again printing 2. Now it's at this point of time, no argument constructor, which is explicitly defined by us, is executed. But if we are not going to provide this default constructor, we just provide the parameterized constructor. That means what? What my line is saying. If we provide any kind of constructor explicitly, then JVM will never provide the default constructor. हम एक भी कंस्ट्रक्टर नहीं प्रोवाइड कराते चलता, बट हमने एक कंस्ट्रक्टर एक्सप्लिसिटली प्रोवाइड कर दिया है. अब JVM डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड नहीं करेगा, इसकी वजह से यहां पर एरर आ रहा है. अरे क्या बोल रहा है कि सर ऐसा कोई कंस्ट्रक्टर आपके पास है ही नहीं जो नो आर्ग्यूमेंट हो, है ना, जो नो आर्ग्यूमेंट. तो कंस्ट्रक्टर बहुत ही बार पूछा जाता है इंटरव्यू में, इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है. तो हम लोगों ने क्या क्या देखा, एक बार फटाफट देखते हैं इसको. कंस्ट्रक्टर स्पेशल मेंबर मेथड ऑफ द क्लास. इट हैज द सेम नेम एज द क्लास नेम. इट इज डिक्लेयर्ड. ये सारी चीजें मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग इसको देखिए. और आप कंस्ट्रक्टर चेनिंग और कंस्ट्रक्टर को फाइनल क्यों नहीं बना सकते, कंस्ट्रक्टर को स्टैटिक क्यों नहीं बना सकते, इसको प्राइवेट कैसे बनाते हैं और कैसे यूज करते हैं, ये सब चीजें आप लोग एक बार जाकर देखिए. थैंक यू ऑल फॉर टुडे. और बाकी हम नेक्स्ट क्लास में इनहेरिटेंस के बारे में देखेंगे, तो काफी और कॉन्सेप्ट इसके बारे में क्लियर होगा, क्यों नहीं इनहेरिट हो सकता कंस्ट्रक्टर वगैरह. So thank you all. Do like, subscribe, share my videos so that the needy one can go through with this. Thank you all.